पिला माने आज आम देखा गोटे नुआ चैप्टर आम देखा दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आगुरी आम पढ़ी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पिला माने दैट इज व्हाट इज चार्ज तुम जानिच सो चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ ए बॉडी एंड ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एवं आम जानिचु चार्ज इज टू टाइप्स one is positive charge another is negative charge so now when the charge is at rest it produces electric field and experience also force due to other charges and this is called electrostatic but when charge moves it produces current तेणु बर्तमान आम देखा जो करेन्ट पास करुच्ची से करेन्ट पास कले सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होची तुम तो जान मैग्नेटिक फील्ड कौन इट इज मैग्नेटिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट मैग्नेट कौन तुम मैंने पे सब जान मैग्नेट मैग्नेट इट इज ए टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड सिमिलारली जमी आम चार्ज रखले सराउंड गोटे फील्ड प्रोड्यूस हुए सेमती मैग्नेट गोटे रखिले मैग्नेट चारिपटे फील्ड प्रोड्यूस हुए आम जो गोटे मैग्नेट पाखे गोटे किसी लुहा गुंड बा किसी आम लुहा कंटाटे रखा कि दूर से टाणी नौ कहीं ना जिते निडलटा बा लुहा कंटाटा ता पाखक आसिक पहुँचुची ता फील्ड भितर पहुँचुची से टाणिकी नहीं जाऊँगी सो दिस इज द बिकॉज दिस रीजन देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ द दैट मैग्नेट सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड तो आम देखो सो मूविंग चार्जेस दीज आर द चार्जेस ऑल आर मूविंग सो एंड दिस इज द मैग्नेट so the magnet is a north pole south pole and here देखो and these are called magnetic field lines एटा सब कौन कहते मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बा लाइन्स ऑफ फोर्स तो माने आम जदि गोटे कंपास को लेकिन मैग्नेटिक कंपास को लेकिन आम जदि आम पाखरे रखा से कौन हम ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखेब से जो दिगरे तार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखे देखे जीव आम से गुड़िक जदि पेनसिल पॉइंट पके पके जीवा एवं जोड़ीदबा जोड़देले ये कर्व आसब एवं एगुड़ कहते मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एवं आम जानिचु व्हेन ए ग्लास रड रब्ड विथ ए सिल्क क्लथ प्रथम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ीचु जिते गोटे ग्लास रड नवा तापर सिल्क क्लथ को रब करवा रब कलापर कौन हम ना किस समय पर जदि ग्लास रडटा कौन हम पॉजिटिवली चार्ज हम आउ सिल्कटा नेगेटिव चार्ज हम सिमिलारली आम जदि देख व्हेन फाइंड सम चार्जेस हियर तो आम जानिचु देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस तो ग्लास रड बिकम्स पॉजिटिव चार्जेस एंड इट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड देखो व्हाट हैपेंस व्हेन वी कोम्ब आवर हेयर्स आम हेयर को जो कोम्बिंग करूँ आम ड्राई हेयर को कौन करवा गोटे प्लास्टिक कोम्ब आनिबा कोम्बिंग बहुत समय एमती कुंडे 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 तापर कौन करवा तुम सब पिला माने जानिच छोट पेपर पीस को सब रखीदे पाखे से टाणी आन कहीं टाणला ना ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी आम जो कोम्बिंग कले से कौन हम ना जो कोम्बिंग हम से कौन हम ना आमर जो फ्रिक्शन हम क्या सहित ना आमर हेयर सहित आउ कोम्ब सहित फ्रिक्शन जो कौन हम ना इलेक्ट्रॉन्स बर्तमान कौन हम ना आम चुटी बर्तमान रिमूव हम हो बर्तमान आमर कोम्ब उपर एक्युमुलेट हो तेणु जो कौन हम जहाँफल आम हेयरटा हो पॉजिटिव चार्ज आ कोम्बसटा हो नेगेटिव चार्ज से अनुसार देख आमर कोम्स को पड़ेगा सब नेगेटिव चार्ज ताकू जब आम गोटे पेपर को देखा पेपरटा हूँ कौन पिला माने न्यूट्राल ताकू केमी अट्राक्ट कर कौन हुए ना पोलाराइजेशन जो पेपर देहरे चार्ज प्रोड्यूस हुए पोलाराइजेशन कौन आम जानिचु कैपेसिटेंस पढ़ला बेले माने जिते बड़े आम गोटे इन्सुलेटेड गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रहिबो तार सरफेस उपरे अपोजिट चार्ज डेभलप करिबो जाफरे कोम्ब रे जो नेगेटिव चार्ज पेपर को जब आम पेपर देखा पेपर सरफेस उपरे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हम जहाँफल से कौन कर ना आम जाचु नेगेटिव पॉजिटिव को एट्राक्ट करे तेणु से गुड़िक से पेपर गुड़िक से तार सरफेस उपर को एट्राक्ट कर आनिला सो पेपर इज न्यूट्रली चार्ज्ड सो आम देखिलु दैट इज व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स ए न्यूट्रल थिंग इट डेवलप्स ए पॉजिटिव चार्ज सो कोम्ब गेट्स पॉजिटिव चार्ज and the bits of paper gets negative charge. हाँ बता देखो दिस इज द लाइटिंग आमर जो बिजुली मारे कहते दिस इज द लाइटिंग सो हाउ लाइटिंग इज प्रोड्यूस्ड तुम जानिच जिते आमर वर्षा पूर्वर जो सब बादल सब आम सब क्लाउड मान सब बहुत स्पीड रे भासुता ऊपर
जो अधिक स्पीड जो मोशन कर भर कोलिजन हुए एवं से समय कौन हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भितर रही जो तार आमर कौन हम स्पार्किंग हम इलेक्ट्रॉन सब रही प्रोटॉन रही भर कोलिजन हेले जोर स्पार्क हम और से स्पार्कटा से कौन हम इलेक्ट्रिक करेन्ट हिसाब से सी चाहिए कौन हाँपाई ना न्यूट्रल हाँपाई तेणु न्यूट्रल हाँपाई बेले सी कौन कर डाउनवर्ड डायरेक्शन आसो एवं अर्थ सहित न्यूट्रल हाँपाई से समय ता रास्त जी पड़ो ताकू से अफेक्टेड कर से अनुसार बड़ बड़ बिल्डिंग ट्री गछ मान देख बहुत समय कौन हुए ना एमती आम लाइटिंग हेले बहुत डैमेज कर दिए नष्ट हो जाए बहुत लोक मैंने मरी जाती जदि आम शुणी पाने जो घड़घड़ी समय बिजुली समय बहुत लोक मैंने गुरु गाई जीवजंतु सब मरीगले कौन पाई ना ड्यू टू दिस लाइटिंग बिकज सब से तलू को आसे आर्थ हाँपाई से आमर घर सब छात मान गोटे गोटे आर्थिंग गोटे बड़ बड़ तार देखी एमती पिन पॉइंटेड होगी तलू को आसी जोटा कि आम लाइटिंग हेले से कौन कर आम घर को सेव कर जहाँफल कौन हम ऑल चार्जेस विल बी डिस्चार्ज सम गो टू अर्थ एंड मैक्सिमम विल डिस्चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज जोटा कि आम प्रथम पढ़ी कैपेसिटेंस पढ़ला बेले सेटा हूँ कौन कोरोना डिस्चार्ज बर्तमान आम देखिए दीज आर अबाउट द स्टैटिक चार्ज देन व्हाट इज द बर्तमान मुविंग चार्ज तेना मुविंग चार्ज कौन ना चार्ज जो गोटे मोशन कर से समय तार कौन इफेक्ट हम जानी अलरेडी आम पढ़ी सारी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी गोटे कंडक्टर भितर जब गोटे चार्ज मोशन कला से कौन कर समय ना से समय से करेन्ट प्रोड्यूस कर जोटा कि आम कहूँ एवं करेन्ट बर्तमान प्रोड्यूस होगापर बर्तमान कंडक्टर करेन्ट प्रोड्यूस कला करेन्ट जो पास कर चारिपटे आस्ते 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 कौन हम ए फील्ड इज डेभलप्ड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड सो दिस इज द देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूविंग चार्ज एंड ए स्टेशनरी चार्ज यू सी द पॉजिटिव चार्जेस आर द स्टेशनरी चार्ज and here positive and the electrons the negative charges are moving towards the downward so this is the electrons are negatively charged and when the negative charge electron move they produce current this is called current but that is how do a moving charge produces a magnetic field the magnetic field and the electric field are related to each other तेणु मु कही सारे अलरेडी जिते गोटे करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर आम रखा ता भितर करेन्ट पास कले ता चारिपटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हम सो चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड दैट कैन एक्स ऑन द चार्ज तेणु चार्ज कौन करे गोटे फील्ड प्रोड्यूस करे से चार्ज कौन करे ना अदर चार्ज उपर फील्ड पकाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक समटाइम दैट इज एक्सलरेट्स द चार्ज बर्तमान कौन करे ना यही इलेक्ट्रिक फील्डटा कौन करे ना चार्ज को एक्सलरेटेड कराए तेणु एक्सलरेटेड चार्ज जो आम फ्लो कर गोटे कंडक्टर भितर इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड So this is a charged object that changes its position relative to a particular observer. Positive charge, negative charge, option these are the stationary charge and this is the moving charge. So correct option is moving charge. So moving charge that changes its position relative to a particular observer. Next question देखो, this is an example for moving charge. So option A electric current, voltage, resistance and none of this. That is electric current is an example of a moving charge. आम जानी मुझे कही सारी जो गोटे चार्ज मोशन कर कंडक्टर भितर जेको जगह इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करेन्ट बर्तमान आम देखा द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस केमी हो जे कि प्रथम यहाँ किए एक्सपेरिमेंट करते रे ना ओरिस्टेड आमर जन साइंटिस्ट ओरिस्टेड से कौन करते क्रिस्टाना हुरिस्टेड प्रथम यही इफेक्टा को स्टडी करते कौन ना जिते गोटे कंडक्टर करेन्ट पास कर चारिपटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हम से कौन कले ना गोटे कंडक्टर नेले कंडक्टर नेला परे सो देखो दैट इज मुझे प्रोड्यूसेस नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बट ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड सो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज बर्तमान so what do you observe in the sky so you see this is the different colors and this is color different colors and you will observe that the colors of the sky is different from the normal color sky is blue but here colors are these colors are different so and this phenomena this is due to a phenomenon
is known as what is that is aurora borealis. Aurora borealis. What is it is a wonderful phenomena seen in the sky in polar regions of Alaska and northern Canada. So in this case what will happen? You see what could be the reason behind this phenomena? A phenomena behind the reason कौन? ना जेतेबेले आमे जानिचु during a solar flash समय कौन हुए ना a large number of electron protons are ejected from the sun. sun रे जेतेबेले solar flash हुए sun रो electron और proton large number हिसाब रे large number रे eject होती. Some of them get trapped in the earth magnetic field. आमे जानिचु earth is a huge magnetic field because it is a huge earth is behave as a huge bar magnet. bar magnet बेला बिहेव करे तेणु ता चारि कौन हम ना से अर्थ नंबर मैग्नेटिक फील्ड रही तेणु से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कौन हुए ना किसी चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ट्रैप होकर रही जाती जहाँफल से हेलिकल पाथ रे एलोंग द फील्ड डायरेक्शन ले मोशन करती. हेलिकल पाथ माने स्प्रिंग लाइक पाथ एमती घुरुवे आगू जाऊे घुरुवे आगू जाऊे. दिस इज द हेलिकल पाथ. So पिला माने हेलिकल पाथ माने एमती. This is called helical path. Means in this way the charge particles are rotating also moving and it moves towards the pole of the earth. देखो these field lines come closer to one another near the magnetic poles. Magnetic pole निकटरे magnetic pole आड़को एटी आसंती. देखो they are close together to the these are the helical path travel करती एवं magnetic pole आड़को आसंती. तर magnetic pole आसले कौन हम hence the density of charge increases near the pole. तर पोल पाखे चार्ज डेनसीटी आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चलो जहाँफल कौन हम एक्साइटेड ऑक्सीजन बर्तमान आम कौन अच्छे गैस मॉलिक्यूल अच्छा जो आम चार्ज जी सेटा सब कौन हो एक्साइटेड हो तेणु कौन हम से ऑक्सीजन एटम माने कौन करेंगे एमिट ग्रीन लाइट एंड एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम एमिट्स पिंक लाइट. ऑक्सीजन एटम एमिट्स ग्रीन लाइट एंड नाइट्रोजन एटम एमिट्स पिंक लाइट. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑरोरा बोरेलिस. So this due to this phenomena we get some different colors in the sky. बर्तमान आम देखा सर डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन ए प्लेस्ड इन ए विसिनिटी ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर. एवं जे कि कौन करते ना ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट करते से कौन कहले देख ओरिस्टेड कौन कले ना प्रथम से गोटे नेले बैटेरी नेले एवं गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर. आम सिंपली आम जाचु जो गोटे प्रथम से बैटेरीटे कनेक्शन कले कि ऊपर ये गोटे वेरिएबल रेजिस्टेंस बा रियोस्टाट कनेक्शन कले कनेक्शन करी दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस बा रियोस्टाट एटा की एंड दिस इज द बैटरी ऑफ वोल्टेज फी एवं एटा गोटे गोटे दिस इज ए कंडक्टर एक्स वाई नेले एवं ता तले से गोटे कौन कले ना गोटे मैग्नेटिक निडिल रखिले एवं मैग्नेटिक निडिलटा बा एमती जोटा आम कहूँ सूची चुंबक एमती सपोज यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ हूँ साउथ पोल. जितेबाला आमर से कौन कले जो आम स्विचटा क्लिचटा को क्लोज करवा करेन्टा पास कला करेन्ट पास कला परे कौन है सडन देखागला द मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टेड. सो इट इज गो टू in this position. So magnetic needle is deflected. तो आम आगुरी जानी पिला माने a magnetic field is only deflected by another magnetic field. तेना गोटे मैग्नेटे केवल डिफ्लेक्शन हम आउ गोटे मैग्नेटिक फील्ड ताऊपर इफेक्ट कले जाकि प्रोड्यूस आमर डिफ्लेक्ट हम से सेठू से ओरिजिनल कनक्लूजन कौन कले ना निश्चय जो करेन्ट कैरिंग कंडक्टर करेन्ट जाऊँगी ता चारिपटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होची एवं से जही मैग्नेटिक फील्ड द्वारा आमर यार मैग्नेटिक फील्ड आमर इंटराक्शन है कौन कहूँ ना आमर फोर्स पड़ुची निडिल उपरे सो दैट निडिल डिफ्लेक्ट्स एवं ए निडिलटा कौ दिगरे डिफ्लेक्शन करिवो इट इज ब्यूटिफुली explained by Oersted giving a law called snow roll. Snow roll ता कहती snow को rule snow roll. What is snow?
स्नो माने इफ current in the conductor is from south to north. Current in the conductor is from south to north over the magnetic needle. Magnetic needle upare current rahibo. Then the needle will deflected towards west. तेणु वेस्ट आड़ को डिफ्लेक्ट कर नॉर्थ पोलटा वेस्ट आड़ को डिफ्लेक्ट कर साउथ पोलटा ईस्ट आड़ को डिफ्लेक्ट कर सेमती मैग्नेटा को जब नहीं आम रखीदा कंडक्टर उपर डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन रिभर्स हो कौन हम ना यहाँ ईस्ट को डिफ्लेक्शन कर वेस्ट को डिफ्लेक्शन कर सो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट ओरिस्टेड कंक्लूड दैट then when a current flows in a conductor magnetic field is produced surrounding it. So it is, you see, it is deflected towards the west. जदि आम कंडक्टरटा तार वेयर उपरे रखा देख डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द ईस्ट नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट हियर इट इज डिफ्लेक्टेड ईस्ट एंड you see deflected toward the east and a current in the conductor from south to north here current from conductor south to north in this direction and the needle deflected toward the west and it is to remember we can use the rule snow rule. What is snow rule? So तब आम देखा द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल आम गोटे रूल रु जापर जोटा को कहती स्नो रूल यहाँ कहती स्नो रूल. So snow rule कौन ना if current in the conductor flowing from south to north over the magnet needle, then north pole of magnetic needle deflects towards west. तामान देखो मुझे लिखली सो तेना मुझे जोड़ा लिखली देखो कैपिटल लेटर S N O and here it is W. That S N O W, that is snow rule. That is if current in the conductor flowing from south to north over the needle, then north pole of the magnet deflect towards the west. So this is the snow rule. From this rule आमे बाहर करि परिबा what is the direction of a deflection of the magnetic needle due to a current carrying conductor. से थ्रू आमे जानि परिबा also magnetic needle deflection मध्ये आमे जानि परिबा direction of a current को दिगरे current produce होछि. बता देखबा how this magnetic field is created. So this is magnetic field created due to current carrying or motion of the charged particle within the conductor or due to current in the conductor. बर्तमान आम कौन करवा ताकू एक्सपेरिमेंट रे ताकू देखिबा पई कौन करबा ना प्रथमे गोटे गोटे कार्डबोर्ड टे नबा. सो कार्डबोर्ड भीतर देई आमे गोटे गोटे कंडक्टर टे एक्स वाई को आमे पास तापरे आमे कौन करबा गोटे एटी बैटरी नगेई आमे ताकू कौन करबा करंट पास करेबा. जो करेन्ट आमर कंडक्टर रे पास कर या जो आम किसी आयरन फिलिंग्स आम पकई देथिबा तो आयरन फिलिंग पकई देला परे तापरे करेन्ट पास करके आम कौन करबा स्लाइटली बा जेंटली आम कौन करबा कार्डबोर्ड को टेपिंग करबा. टेपिंग करबा माने आस्ते 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 टेप करबा आंगुली रे. टेप कले कौन हम आम जो देखिथिलु जो आयरन फिलिंग गुडी को पकईथिलु आमर कार्डबोर्ड उपरे से कौन हम ना आस्ते 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 देखा एम सब सर्कुलर पाथ एमती सब अरेंज हो अराउंड द कंडक्टर. सो एमती सर्कुलर पाथ अरेंज हो कहीं अरेंजमेंट हेले ना आम जाचु
the magnet, these iron filling is attracted by the magnet, only magnet, जहाँ पर कौन हम ना आमर कंडक्टर चारिपटे ये सब मैग्नेटिक फील्ड सब लाइन सब प्रोड्यूस है और से लाइन उपरे आमर आयरन फिलिंग गुड़िक सब एट्राक्टेड होकर लगी गले. So these are the conductors. So we keep their iron fillings and you see. Then these iron fillings arranged in a particular pattern. कहीं ना magnetic field is created around the current carrying conductor. तो केमिति से magnetic field प्रोड्यूस है ना it is created due to moving charges in the conductor. Conductor जो चार्ज आमर जानचु कंडक्टर रे करंट फ्लो होची एवं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेणु मुविंग चार्ज जो आमर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है करंट चारिपटे कंडक्टर चारिपटे. सो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड. तेणु आम देखिलु इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड. तेणु बर्तमान तेणु ओडिशा कौन कले ना कौन कले जो आमर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आसला से चारिपटे नहीं गोटे गोटे कौन मैग्नेटिक रखीदे. तेणु मैग्नेटिक रखिले कौन हम से देखागले से मैग्नेटिक गुड़िक सब टेंजेंशियल सेमती तार डायरेक्शन देखी 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 जाऊँगी तार से दिगरे ही तार मैग्नेटिक फील्ड सब रही. देख दिज आर द मैग्नेटिक डिटेल्स. तेणु आम जदि यहाँ धर दिस इज साउथ पोल दिस इज द नॉर्थ पोल. साउथ पोल नॉर्थ पोल आम कौन करवा ये गोटे जब मार्क दबा पुणी ये मैग्नेट नील आनी रखा साउथ पोलटा से रखा नॉर्थ पोल से देखेब पुणी मैग्नेट ये गोटे आम मार्क करवा पुणी अगेन निडलटा को आनिबा रखा. इन दिस वे आम देखिकी आम सब पॉइंट गुड़ा पकई देकी जदि पॉइंट गुड़ी को जॉइन करदे ताले इट विल बी कनसेंट्रिक सर्कल होती आसब. So in this way the magnetic field lines or the iron fillings देखो सब एमती सब सर्कुलर पाथ सब अरेंजमेंट होगी रही. बर्तमान देखा आमर केतटा एमसीक्यू क्वेश्चन. अरोरा बोरेलिस इज ए फेनोमेनन सीन इन द स्काई ऑफ इक्वेटोरियल region, tropical region, you see south polar region and it is north polar region. So correct option is north polar region. So aurora borealis is a phenomenon related to earth days and emission of light by moving charges. So related to earth example, so options are electric field, magnetic field, gravitational field and photoelectric effect. So the correct option is I देखी already this is the magnetic field. Due to magnetic field this phenomena is produced. So deflection of a magnetic needle when placed in the vicinity of a current carrying conductor is due to what is? There is electric field created by moving charge. Second, electromagnetic force. C, magnetic field created by the moving charge. D, this is none of these. So correct option magnetic field created by the moving charge. तेणु आमर से अनुसार कौन हम ना मैग्नेट गोटे निडलटे आम कंडक्टर पाख रखिले मैग्नेट निडल विल बी डिफ्लेक्ट. सो ना आम देखा सोर्सेस एंड फील्ड्स. बर्तमान आम जानिचु व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. फास्ट हूँ मैग्नेटिक फोर्स. सो सोर्सेस एंड फील्ड्स रे फास्ट आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. आम देखा स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. आम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़ी चलीचु गोटे चार्ज जो रेस्ट अच्छी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो एवं से इलेक्ट्रिक फील्डटा आमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एवं ताको आम मेजरमेंट करूँ न्यूटन पर कूलम रे बा वोल्ट पर मीटर रे. देखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन आम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी सारी. E इज इक्वल टू व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर एवं and into vector form it will r cap means it gives the direction of the electric field. तबे जानिचो direction of the electric field कोटे पिला माने from positive charge to negative charge. So ताले कौन हम field F is equal to of force on the charge केते हम F is equal to q into E. So the field at a particular point can be due to one or more charges. देखो इफ देयर इज मोर देन चार्जेस द फील्ड आर आम देखी जाऊँ जदि बहुत गुड़िक चार्ज एक पाखे अच्छा जेकोसी पॉइंट गोटे फील्ड बाहर करवा बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट इज ई नेट फील्ड ऑन एनी पॉइंट ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 ऑल देज आर एडेड वेक्टोरिकली
and what is the E1, E2, E3? These are the electric field due to different charges. Vector काली माने जानिचो पिला माने आमे vector पढिचु by using parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition. These addition law of vector addition पकई कि आमे ताको add करिबा. We cannot add them algebraically. एवं जेकोनसी पॉइंट रे गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे जेकोनसी पॉइंट रे गोटे आमे बाहर करिया पई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड तार स्ट्रेंथ केते से फील्ड रो आमे यूज कलु दा टर्म कोन कहंती ना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. जेमिति आमे जानिचु इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे इलेक्ट्रिक जेकोनसी पॉइंट रे गोटे स्ट्रेंथ आमे मेजरमेंट करू ताको आमे कहू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा सिंपल ताको इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली हियर बी capital B is the magnetic field induction, but simply I am magnetic field, and it is a vector. Now it always have a two component. One is horizontal component, another is vertical component. So the resultant field at any point due to combined effect of a horizontal component and vertical component. Because I mean horizontal component and vertical components are perpendicular to each other. So this is the horizontal component BH. This is the vertical component BV. This is the earth magnetic field and this is the resultant magnetic field B. So this is delta. So the resultant field is equal to, according to vector addition, BH square plus BV square or root over. So direction of a B is measured by a compass needle or magnetic compass. The compass माने it is a free to rotate. बर्तन देखिबा केतटा क्वेश्चन देखिबा एमसी क्वेश्चन. फर्स्ट इ एसआई सिस्टम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर, न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन वोल्ट, both A and B. So the correct person is both A and B. Second question, if there are more charges, the fields add vectorically, and this is called the Fleming's right hand rule, B Fleming's left hand rule, Ampere swimming rule, D principle of a superposition. So correct option man already ebe कहि सालेनी पिला माने, this is according to principle of a superposition. Thank you.